नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ है कहां? हमेशा आपके साथ। भले दिवाली हो, अमावस हो, सूर्य ग्रहण हो, ना हो चंद्र ग्रहण हो, नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी, for the first time in its entire history, the United Kingdom has a Hindu, Indian origin, South Asian origin man as its Prime Minister, Rishi Sunak. Rishi Sunak साहब, जिनके दादा हुजूर गुजरांवाला से हैं। गुजरांवाला अभी पाकिस्तान में है, उस वक्त हिंदुस्तान में हुआ करता था। My father comes from the same place, by the way. Half the family come from Gujranwala, half come from Quetta. He is now the Prime Minister of Great Britain. Now, whereas I feel great about the fact that you've got an Indian origin man as the Prime Minister of Britain, but at the same time, one must also acknowledge the large-heartedness, the generosity, and the spirit of acceptance in Great Britain that they have got a non-white, non-Christian, non-Church of England worshipping Prime Minister. Which is amazing, really and truly amazing. Sir, if you see, there is a change. US President Barack Obama, former US President Barack Obama, the first non-white in US. And now you got UK, a non-white Hindu, a cow-worshipping man. Yes. The torchbearers of democracy, whenever you talk about them, you talk about USA and UK. Yes. They never found their roots. The entire liberty, equality, justice and fraternity was only in the textbooks. It is sometimes portrayed in real life. But still, US doesn't have a lady president. Not yet. However, they preach about being the torchbearers of democracy and torchbearers of liberty. You have not incorporated that in letter and spirit. First time, UK has done it. A non-white, as you say. UK has had three women prime ministers. Women prime ministers. Yes. Non-white. Non-white, non-Christian. Non-Christian. Never. First time. So there's undergoing a change happening everywhere. There's an acceptance that you cannot survive on certain principles and certain beliefs that you own. Though we are still waiting for a woman president in US. Might happen very, very soon. You never know. Kamala Harris might take over. Yes, by default. But we want. But by default, if there has to be a mindset among the people, a change of mindset among the people, that is essential and absolutely essential. If you say you believe in equality, you believe in equality. But I tell you Show what, it to us. let's take a look at this. I'm so sorry, and we are talking about this, which really, actually speaking, should not concern us. Not in India anyway. Whosoever is a UK Prime Minister will work for UK's interests. Let's be very clear. But there is a talk in India that the Indian mindset is not ready for these kind of changes. Yes. But at the same time, there is another group that says we already had Mr. Manmohan Singh. Where the Sikhs only constitute 2%. Less than 2%. He was less than 2% of the population, and we had a prime minister. Yes. And we had presidents, so many. Oh, so many. We've had so many presidents. Who were from the Muslim community. India's different. No, so linking both together. They say that India should need a change of majoritarian politics. But that is untrue as far as India is concerned. Hindustan mein, there have been 4 Muslims who have been the Chief Justices of India. 4 Muslim Chief Justices हुए हैं. और at least 4 Vice President हुए हैं. ठीक है साहब. 3 President हुए हैं जो मुसलमान हैं. We have had 1 Air Chief Marshal. Yes. Air Chief Marshal, the highest officer, highest ranking officer of the Indian Air Force, who's been a Muslim, Idris Latif. So I don't think that it doesn't apply to India. What I'm trying to say is something else. What I'm trying to say is Rishi Sunak has become Prime Minister now because the Conservative Parliamentary Party, the Tory Parliamentary Party, voted for him. The MPs voted for him. Yes. Right? Now, even before, after Boris Johnson had resigned, most MPs had voted for Rishi Sunak anyway. What they did was, they said, no, the entire Conservative Party will have to vote as to who will be their leader. Yes. I am reasonably certain if they had gone the same route even this time, Rishi Sunak would not have been Prime Minister. It just so happens that the MPs decided कि भाई ऋषि सुनाक ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं. उन्होंने पहले भी ये किया था. जो बाकी कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आया है.
they are still what they were earlier. But the ultimate thing that happened was he is the Prime Minister. He is the Prime Minister. And he is the Prime Minister of a country that ruled us for nearly 200 years. That's right. And they didn't have a choice. The fragile economy, you needed somebody on the verge of collapse. You needed somebody like Rishi Sunak to really re-empower the United States. An Indian origin. United Kingdom. Indian origin. United Kingdom. Khatri, Hindu, Punjabi. Cow worshipper. And the most important thing, a cow worshipper. And he's not afraid to say so. To say so and to do it in the open. Do it in the open. Wearing the traditional clothes, the traditional attire. And goes to the ISKCON temple. Bilkul. Goes to all the Krishna temples. Never afraid Krishna Bhakt. to project his faith and belief, whatever he is. He said, I am going to do it. Yes. And the way he has done it, I mean, you find him in traditional attire, worshipping cows, traditional attire, doing the puja, everything. And lighting lamps. Yes, everything to signify that I am a Hindu. That's right. And I'm unafraid of projecting it. Now, these are the changing circumstances across the world where people are slowly believing that you need to come out from the mindset. But it's good for people. Indians are there everywhere. So today it's pop up in UK, tomorrow it'll be but pop up in US. I can only sincerely hope that Mr. Rishi Sunak does not go the route of whenever Indians come into positions of power, just to prove their loyalty to their country or whichever country they are in, they try and be as anti-Indian as possible. I hope that does not happen. Because one can only hope. इसमें सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं. But then as Mr. Narendra Modi was among the first people to congratulate him, और उन्होंने सबसे बड़ी मुबारकबाद उनको दी ऋषि सुनाक साहब को कि भाई पहला हिंदू 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है. And the way Sunak said that I am going to impose myself by my actions, by my deeds, words, not part of the words. And everywhere there's a need for actual leaders who perform. People have moved out of the mentality that we want a compromise candidate. वो चला गया sir. They're empowering people who can take decisions for the good of the country, for the good of the people, good of the state. ऐसे लोगों का एक पूरे दुनिया में एक वातावरण है कि good leadership is being given a chance, allowing them to perform like our Narendra Modi ji, allowing rather than Manmohan Singh. When we compare, we need to know that you are being elected as a leader to serve the people with utmost faith and with very good intentions. So Mr. Modi has a hand, a finger in every decision making for the betterment of the country. अभी जैसे दिवाली कारगिल में जाके सेलिब्रेट किए. वो तो हर साल करते हैं. वो तो हर साल जवानों के साथ ही करते हैं. And the same thing has been replicated by Eknath Shinde here. Yes. Where how the decision making of leaders influence and trickle down to the lowest yes. लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का आपने कंपैरिजन दिया, बिल्कुल. वो मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उस पर ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह डिड नॉट लीड द पार्टी टू विक्ट्री. लेट्स बी वेरी क्लियर. ही वाज इम्पोज्ड एज प्राइम मिनिस्टर. 2004 में जब 2004 में जब कांग्रेस जीत करके आई है, सोनिया जी हैड लेड द पार्टी टू विक्ट्री. सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने. तो उनका और नरेंद्र मोदी जी का कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि ही हैज बीन अ ब्यूरोक्रेट ऑल हिज लाइफ. Exactly. एंड नरेंद्र मोदी हैज बीन अ पॉलिटिशियन ऑल हिज लाइफ. बिल्कुल. पहले आरएसएस के प्रचारक, वो इफेक्टिवली एक पॉलिटिकल पोस्ट ही है. Yes. और उसके अलावा ही हैज बीन अ पीपल्स मैन, नरेंद्र मोदी जी. बिल्कुल. और जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी ने हमेशा बचपन से आज तक सिर्फ गरीबी देखी है. और आज भी अगर आप देखें, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा. मुझे मालूम नहीं आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं होगा. आपको मालूम है 2014 से लेकर के आज तक, अभी हम कहाँ हैं 2022 में. एग्जैक्टली. वी आर इन 2022. आपको मालूम है सर, नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री के रूप में की भूमिका में, आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी का सरकार को जो बिल जाता है खाने का, फूड बिल जो होता है, आपको मालूम है कितना है 2014 से लेकर कभी तक? आप गेस करेंगे? एब्सोल्युटली इन्फोर्स कैंटीन में भी उन्होंने बंद कर दिया. आप गेस करेंगे कितना? जीरो. पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का जिसने 1 रुपया चार्ज नहीं किया सरकार को, 1 रुपया चार्ज नहीं किया सरकार को अपने खाने के ऊपर. एंड हाउ डू आई नो दिस? आई डिडंट इवन नो दिस बाय द वे. देन आई चेक. I came to know this after I saw it in some Pakistani channels.
और वो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े वेल नोन जर्नलिस्ट, हामिद मीर हो गए, बाकी सब लोग हो गए, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें देखें, हमारे प्रधानमंत्रियों को देखें, उनका तो खाना का अगर रोज का मेन्यू देखें, तीतर बटेर और पता नहीं मुर्ग मुसल्लम और मटन 2 प्याजा और पता नहीं क्या कुछ, पता लाखों करोड़ों का तो बिल उनका सिर्फ खाने का होता है. Yes. And the government pays for it. बिल्कुल. And as far as no wonder they said the India is progressing so much because you got a prime minister who pays for his own food. बिल्कुल sir. And this they is go all out. And if you want to see the goodness of the prime minister that we have, actually you should watch Pakistan channels. Yes. they say, देखो हमारे खानदानी लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनते हैं, हम इस खानदान से है, सबके सैकड़ों होटल है, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, अलग अलग बिजनेसेस है, एंड चेन ऑफ बिजनेसेस ऑल अक्रॉस द नेशन एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड वहां देखो इंडिया में जी, इंडिया में एक गरीब से गरीब चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, जिसका भाई अभी तक रिक्शा चलाता है. कुछ नहीं है ना, उसको अपेक्षा है चेन ऑफ होटल्स की, जैसे आपने बोला कि फैमिली को चेन ऑफ होटल्स में सब पार्टनरशिप दिला देने का, सब कॉर्पोरेट कंपनीज में हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनका स्टेक्स होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं होनी चाहिए. You can't even link one particular company or anything to do with your family, entire family, nor with him. Not with him. That is when you understand the importance of our prime minister. And when we are coming back to this, कारगिल में करते हैं, but the trickle down effect, sir. Sir, not only that, even अभी जो वो गए थे केदारनाथ जो गए थे मंदिर में, exactly. और रास्ते में वो मजदूरों की जो कैंटीन थी वहां बैठ करके खिचड़ी खाई है उन्होंने, सबके साथ नीचे बैठ के. बिल्कुल. मेरा ये कहना है, इसके पहले नरेंद्र मोदी जी पहले से ही करते थे. एक दूसरा आदमी है जो यही काम करता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल. बाय द वे, किसी ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर में खाना खाना, इधर खाना उधर खाना उधर खाना. सो वी आर लकी टू हैव एट लीस्ट leaders who are not afraid. People like who? Sorry, I don't want to interrupt my train of thought. नरेंद्र मोदी जी हो गए, अरविंद केजरीवाल जी हो गए, Now एकनाथ शिंदे, ममता बनर्जी हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, एकनाथ शिंदे हो गए. yes, yes. आप इनके साथ राजनीतिक तौर पर आप इनके साथ बिल्कुल डिफर कर सकते हैं कि भाई वो अलग है, इनका थॉट अलग है, ये है, कोई किसी को देशद्रोही बोलता है, कोई किसी को, बट you cannot point fingers at their honesty of purpose and their commitment to India. आप देखिए, unafraid. Unafraid. So we are lucky. I am this, I am going to be that. I don't want to duplicate myself into anything else. So Pradeep ji, we are lucky. हिंदुस्तान में yes, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि ऊपर वाले ने हमें ऐसे लीडर दिए. And people are voting them again. The faith they impose on these leaders is amazing. आज भी नरेंद्र मोदी को आप देखो, he is nobody next to him where leadership is concerned. आज भी आप पॉपुलैरिटी आप देखोगे, लोगों से पूछेंगे और ओपिनियन पोल लेंगे, ही इज वे अहेड ऑफ द क्राउड. जैसे मोदी जी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, आज तक 250 रुपए की वो पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, और वही हवाई चप्पल बिल्कुल बाहर मतलब सड़क से खरीदी हुई, और आज तक अपने चाली के घर में रहती हैं, चौल वाले घर में रहती हैं. ठीक है, अरविंद केजरीवाल हो गए, और तो और छोड़िए, अपने भगवान मान हो गए. बिल्कुल. इस तरीके से द फैक्ट रिमेन्स, वी नीड ऑनेस्ट लीडर्स, एंड इंडिया हैज ऑलवेज बीन लकी टू हैव सच लीडर्स. ऑफ कोर्स we've had the other side also, we've had other leaders also जो अजीबो गरीब किस्म के हैं. It is now is the days of people who come from जो मतलब rags to riches stories, people coming from nowhere and attaining that position and sticking by the way of principle, सिद्धांत, और दूसरे they have so much confidence in their self and the abilities that they don't fee anything कि मतलब कि हम display करेंगे जो है ही नहीं. मोदी, I'm a Hindu, I'll wear my saffron clothes. केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, हर जगह जाएंगे, ओमकारनाथ में कॉरिडोर. I am not ashamed of it. And look at same thing in Rishi Sunak. He is not afraid to expose the religion that he is coming from. Why should he be? He is not afraid to say that I'm a co-worshipper. He is doing it. He is doing out in the open. Absolutely. आपको चुनना है तो चुनो, नहीं चुना है तो I'm going back to my work. I mean, absolutely. Kejriwal coming from nowhere. I mean, he's worked his way up. Yes, he was an income tax commissioner. Income tax commissioner. और वो छोड़ छाड़ के पॉलिटिक्स में आ गए. भगवंत मान, as you said. ये भगवंत मान अभी तक सर अभी तक किराए के घर में रहते हैं, वो अपने माँ के घर में. बिल्कुल. सीधी सादी बात है. कॉमेडी शो शायद आपके शो में भी आए थे भगवंत मान. So they have. मेरा ये कहना है बिल्कुल कि अब एक नई जनरेशन ऑफ लीडर्स आ रही है. Exactly. जो मुझे बड़ी खुशी होती है ये बार बोल के, लेड बाय मोदी जी. मोदी जी ने इसमें नेतृत्व किया है सारे देश का. क्या है कि जिस प्रकार के हम लोगों के नेता
आजादी की लड़ाई में हुआ करते थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, Selfless. बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई हम देश के लिए अपना काम करेंगे, सब कुछ न्योछावर करेंगे। Yes. मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है ये देख करके कि जिस प्रकार का कमिटमेंट उस वक्त था, उस प्रकार के कमिटमेंट के कई नेता आज की तारीख में हिंदुस्तान में हैं। इसलिए भारत माता की जय। मैं जब भारत माता की जय बोलता हूं, मेरी आंख में खुदा अपने आप आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब this new generation of leaders is the one which will take India forward, and I'm really proud of it. Sir, look at, he goes to Kargil and he says, I want peace. But I know peace will come only if I am powerful. That's it. It's not some Mahatma Gandhi. I mean, he's definitely, whenever he's talk about principles, he's directly following Mahatma Gandhi. जैसे ने बोला, you cannot talk about peace until you are strong. Yes. तो ये एकदम Emperor Ashoka, he said peace will be, I am in Buddhism, but the borders will be absolutely strong. There will be no penetration, there will be no attacks. The country has to be, the country is super much. So these people, जो हमारे leaders है, they know the basic fundamentalism, fundamental principles in life. Security, internal security. We have voted for internal security. There will be no compromise on that. He said, I want peace, but I am going to be powerful so that I can maintain that peace. And the same thing is followed down everywhere. The leadership qualities, here we saw. What I'm even say, महाराष्ट्र में अब तक कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मिला जो गढ़चिरोली में जाके दिवाली मनाए. We need to appreciate. Yes. सब बोलेंगे वो नक्सल प्रोन एरिया एंड नक्सल प्रोन. सर, एक होम मिनिस्टर थे बहुत बड़े महाराष्ट्र के. बिल्कुल बिल्कुल. हम लोगों के इनविटेशन के बावजूद, कहने के बावजूद, हम उनका इंतजार कर रहे हैं गढ़चिरोली में. बिल्कुल. वो नहीं आए. हम लोग घूम के आ गए पूरा गढ़चिरोली. गृह मंत्री साहब नहीं आए. सीधी सादी बात है. ये एक नाथ शिंदे जी जो गढ़चिरोली गए हैं, हैट्स ऑफ टू हिम. ऐसा होता है मुख्यमंत्री, दिलेर, बहादुर, जिगर. लीडरशिप ये होता है जिगर. बिल्कुल. ये बता दें. अरे लुक एट द वे, जैसे फडणवीस अगर पूछे तो फडणवीस ने बोला कि व्हेन उद्धव ठाकरे क्रैक्ड इट जोक दैट ये उत्सवी सरकार है. जी, ये हमारे महाराष्ट्र में जब उत्सवी सरकार है, जहां उत्सव है पहुंच जाते हैं, हर उत्सव में पहुंच जाते हैं, बस उनको उत्सव में पहुंचना ही काम है और कुछ नहीं करते. आई मीन, बट द सेम टाइम फडणवीस से कि मोदी जी अयोध्या में जो किए हैं, दिवाली, दीप उत्सव, राम, ही सेज he has declared to the whole world that India, everything is in celebration mode. लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर एक नाथ शिंदे जी ने यहाँ पे बोला, वो गौर फरमाने लायक है. उन्होंने ये कहा उद्धव ठाकरे जी से, महाराष्ट्र का विकास उत्सव चल रहा है, जहां जहां मैं जाता हूं वहां विकास का उत्सव है. आपको पसंद नहीं है, वो आपकी मर्जी. बिल्कुल सीधी सादी बात है. So our leaders are not afraid of anything because probably they believe in whatever they do and they believe priority महाराष्ट्र में क्लियर कर डेवलपमेंट है. जी, मैं डेवलपमेंट से एक स्टेप पीछे नहीं हटूंगा, इंस्टेड डेवलपमेंट के लिए 2 स्टेप आगे बढ़ूंगा. एक नाथ शिंदे इज एब्सोल्युटली क्लियर. आप कॉन्ट्रैक्टर बोलोगे उसको, कॉन्ट्रैक्टर से बोला हाँ आई हैव टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट. उत्सव के बाद जो आपने बोला, यस आई विल मेक एवरी डे अ सेलिब्रेशन. एब्सोल्युटली. Fadnavis, impossible. Like, yes, we are on the right path of development. At the same time, Mr. Modi in Ayodhya has shown to the whole world that India is full of celebrations. Please come here. He's making this a tourism paradise. And the most important thing that you found in Kashmir, जो आप बोल रहे थे इस प्रोग्राम से, रबानी साहब, fantastic cultural minister of the Iranian embassy. Iranian embassy. बोले Kashmir is safe, peaceful and happy. Yes. He says this is the first place, India is the only place which you always tell, Abharjan, कि एक शिया को total freedom है to do propagate and preach his religion and whichever way you want. There's no obstruction. The state is helping him to do it. इबादत करने की शियाओं को पूरी इजाजत ईरान के अलावा सिर्फ हिंदुस्तान में है और कहीं नहीं है. और मिस्टर रब्बानी ने आगे जाके बोला कि यहाँ पर कश्मीर में हिंदू मुसलमान एक साथ पूजा पाठ करते हैं. They are praying together. Yes. They respect each other. Look at come in Kashmir. And where did he say it? Most importantly, he said it in Baramulla. कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जाकर के बोला है इरानियन कल्चर मिनिस्टर ने. Yes. मतलब हिंदुस्तान में इंडियन एम्बेसी के जो कल्चर मिनिस्टर हैं वो. But that's a very great statement to be given. To show to the whole world, to showcase to the whole world that Kashmir is here, it is peaceful, it's happy, it is safe. And look at how both religions are coexisting with each other, helping each other. And he goes one step ahead.
But the freedom that you get in Kashmir is and in India is nowhere in the world. अरे यहाँ पर वो नहीं है कि सुन्नियों ने ये कह दिया कि ये शियाओं की मस्जिद को उड़ा दीजिए और हर शुक्रवार को हर जुम्मे के दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा शियाओं की मस्जिद में, जैसे पाकिस्तान में होता है Exactly, अक्सर। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, India is progressing and going in the right direction. I hope it continues. That's all that one can hope for. I hope it continues. And as Mr. Modi said, without power, there can be no peace. I hope to God, whatever are the requirements that have been given by the armed forces will be fulfilled by the government of India. Yes. Because at the moment, we are surrounded by enemies practically on all sides, but certainly on two fronts. Fighting a war on two fronts. There is only one nation in the world which has been successful in fighting a war on two fronts, and that has been Israel. So far as India is concerned, India is fighting a 2.5 war. As we one are of the generals said. two fronts and a front within India. Within India. And till today, the PFI, by the way, is still not finished. Sir, the Coimbatore blast. Yes. It only indicates one thing, that you can't have a weak state government. You can't. The country, the whole nation has voted Mr. Modi to power for security, internal and external. But the state has got a responsibility. The state chief ministers, the state, any party, you can't have a compromise where terror is concerned. You can't compromise with the lives of the people. You can't have an appeasement politics that affects affairs of the state. You can't do it. As Mr. Modi said, zero tolerance for terrorism, yes. Zero tolerance for any anti-India activity. बिल्कुल सर. हिंदुस्तान में रह करके भारत के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते. अगर आप करेंगे तो आपका भी वही हशर होगा जो आतंकवादियों का होता है. किल, शूट, किल एंड बेरी. वही होने वाला है सबके साथ. याद रख लीजिए, ये मोदी है. एक चीज याद रख लीजिए, जैसा नरेंद्र मोदी जी ने लंदन में कहा था, लंदन की टाउन हॉल मीटिंग में कहा था, ये मोदी है, घर में घुस के मारेगा. आप अपने ही घर में, हमारे ही घर में घुस करके अगर आप हिंदुस्तान के खिलाफ हमला करेंगे तो आपका क्या हशर होगा आपको मालूम हो जाना चाहिए. India will not tolerate any anti-Indian activity within India or outside India. Let's be very clear. Exact. और जैसे इजरायलीज करते हैं, उनके खिलाफ अगर आपने कुछ किया, दुनिया के किसी भी कोने में आप हों, the Mossad will reach you there and will finish you off. That is the kind of fear psychosis that must be developed in all the people who would work against India. Exactly. And I think we are getting there. Slowly and steadily, I think we are getting there. And over here, that new recruitment scheme of the army. Yes, sir. मैं आपको बता रहा हूं, उसकी वजह से हिंदुस्तान में जो एक नई मिलिटेंट, एक नया मार्शल जोश, यस, एक नया भाव जो बाहर आ रहा है धीरे धीरे सब लोगों में कि भाई अग्निवीर स्कीम को लेकर के कि भाई किसी भी तरीके से मुझे अपनी देश की रक्षा करने के लिए एक तो ट्रेनिंग मिल रही है, उत्साह मिल रहा है और मेरी बहादुरी जाग रही है. मैं ये मान करके चलता हूं प्रदीप जी, उससे इट विल बी द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स इन इंडिया. In the next 5 years, you will see that transformation within India. Absolutely. India will not be a country that you will be able to trifle with. नहीं होने वाला. नहीं होना. Impossible. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. आप लोगों को एक बार फिर हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली. सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं. Very, very, very happy New Year to all of you. Congratulations to Mr. Rishi Sunak and congratulations to the people of Great Britain for having chosen an Indian origin Hindu cow worshipping Khatri Punjabi as your Prime Minister. God bless you all. And as far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow. कल होंगे हम आपके साथ एक बार फिर. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम.